Yes, hello Amit. Welcome on YourPedia platform, and let's start your RAC snap for your BPSC interview for the post of lecturer. Yes, sir, yes. So Sure. Amit, what is the difference between refrigeration, air conditioning, and cooling? This is my first question to you. Yes. Sir, main difference between the refrigeration and air conditioning is that in air conditioning, the main function is to remove the heat and the moisture from the interior space to make the interior space in a comfort zone. Whereas in case of refrigeration, we remove the heat from the lower temperature reservoir and transfer the heat to the higher temperature reservoir. What do you understand by summer air conditioning? Summer air conditioning. So similarly as like the air conditioning, that we have to remove the heat, moisture, and also maintain the velocity of the air for making the human Then being. what is winter air conditioning? सर मैं ये इसमें सर कन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ बता सकता हूँ इसमें से। हाँ, yes, yes. ये ठीक है सर। या सर, मुझे ये लगता है सर कि जो समर एयर कंडीशनिंग में है, वहाँ पे हम लोग मेन मोटो है कि मुझे सेंसिबल या समर, हाँ, सेंसिबल कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन मुझे चाहिए, और इन द केस ऑफ विंटर एयर कंडीशन सेंसिबल हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन and sensible cooling and dehumidification in case of summer air conditioning. Amit, what are the desirable properties? Some of the desirable properties of a refrigerant. Yeah. Sir, first thermodynamic properties and the chemical properties, and another one is physical properties. बताओ ना फिर थर्मल प्रॉपर्टीज बताओ. हाँ, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में है सर 3-4 पॉइंट है सर. वन इज critical temperature of the refrigerant should be high. It must be above the condenser temperature. And second one is enthalpy of evaporation. Enthalpy of evaporation should be high for the same refrigeration capacity, so that mass flow rate is going to be reduced. And third one, sir, thermal conductivity should be high. If thermal conductivity will high, then the size of the evaporator will reduce. And fourth one is that compression ratio should be low. If the compression ratio is high, work input required to the compressor will more, hence the volumetric efficiency will going to be decreased. And the fifth one is freezing temperature should be low, and one is a specific heat. A specific heat of the vapor should be high in order to limit the degree of superheat, whereas in case of specific heat of the liquid should be low in order to limit the degree of irreversibility. And some chemical properties are toxicity should be low, and non-flammability should be low, but it should be non-flammable. And action with the oil, some part, that is the refrigerant should be fully immiscible, or it should be fully immiscible. If it is partially immiscible, then it may cause a choking problem. For example, for one refrigerant R22. And physical properties, the force should be low, and viscosity should be low, so that easy flow of the refrigerant and leak detection should be available. आप बताएं सुपर हीटिंग क्या होता है अमित, and what is the use of carrying out superheating in VCRS? Yeah, sir. Means we have done the superheating above the saturated vapor and saturated vapor line at a constant pressure. And if we do the superheating in case of VCRS evaporator, the refrigeration effect as well as work input is going to be increased, which hence the COP may be increased or decreased. It depends upon the types of refrigerant we have to use. For ammonia, it is going to be decreased COP, and for R12, it will going to be increased by doing the superheat.
आपने स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन के बारे में सुना है? Steam jet refrigeration, sorry sir. Can you tell me the working principle of a Electrolux refrigerator? Yeah sir. Electroflush. Sir, in main function of the electroflush refrigerator, to make the noise, to make an 1 minute sir. 1 minute sir. Sir, the main function of the electroflux refrigerant is to create a noiseless operation. And that is by removing the pump in case of VRS. In this case, three working fluid is used. One is ammonia, water, and hydrogen. Whereas ammonia is act as refrigerant, and water is used as a absorbent, and hydrogen is used to create a low partial pressure of ammonia vapor. Hello. Yes, sir. Hello. Amit, can you tell me something about throttling process? How we Yes, carry out throttling, and why actually the temperature of the refrigerant, liquid refrigerant, decreases when we carry out throttling? Yes, sir. The main flow through a constricted passage or flow through a constricted passage is known as the throttling. And again, sir, what you asked, sir? How actually the temperature of the refrigerant, liquid refrigerant, decreases when we carry out throttling? Sure. Sir, because sir, as we know that the flow through a constricted passage, and due to the constricted passage, the pressure is going to be dropped, and during that time there will be also a friction between them. And then due to this friction, the temperature is going to be increased of the liquid. अच्छा, आप वेट बल्ब डिप्रेशन को समझते हैं? व्हाट इज दैट वेट बल्ब डिप्रेशन? Yes, sir. Yes. So first of all, sir, wet bulb depression. सर सिर्फ मुझे भी याद है कि डिफरेंस होता है सर इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर का और वेट बल्ब टेम्परेचर का. What is thermodynamic wet bulb temperature? Sir, is the temperature which is measured by the simple thermometer whose bulb are covered with a wet cloth. No, that is WBT, na? That is WBT. What you ask, sir? Again, that is WBT. Dry bulb temperature you ask, sir. Hello? Hello? Yes, Amit, go ahead. What you ask, sir? Dry bulb temperature? No, that the point which you mentioned, when the bulb is covered by some cloth, that is wet bulb temperature. What do you feel? What is the difference between wet bulb temperature and thermodynamic wet bulb temperature? Both are same. Oh. The thermodynamic. Thermodynamic. सर अभी कोई बात नहीं. आप मेरे को बताओ, ये सेंसिबल और लेटेंट लोड में क्या डिफरेंस है अमित? सेंसिबल लोड और लेटेंट लोड. यस, 1 मिनट. हाँ सर, सेंसिबल लोड जो होता है एट विच जहाँ पे मतलब कि सर जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा सर बिटवीन द, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा सर वहाँ पे सेंसिबल है, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा हमारा, मतलब जहाँ पे फेज चेंज होगा वहाँ पे हम लेटेंट लोड का फाइंड आउट. ये दोनों है सर, मतलब टाइप्स ऑफ इंटरनल एनर्जी कर सकते हैं सर. अच्छा, आप मेरे को बता सकते हैं अमित, तो वेंटिलेशन और इनफिल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंटिलेशन एंड इनफिल्ट्रेशन?
सर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन तो हमने नाम सुना है सर। इनफिल्ट्रेशन नहीं सुना? इन्फिल्ट्रेशन नाम सुना है, लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा है कुछ इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन वेंटिलेशन हम लोग लगता है सर मतलब यूज करते हैं जो भी हमारे मतलब कि इन्वायरमेंट का जो भी मतलब क्या करते हैं तब मतलब कि अच्छा कोई बात नहीं अमित, मेरे को मेरा हम्म, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आप मेरे को ये बताओ, आपने OWP और GWP सुना होगा, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। हाँ 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 सर। तो हाँ क्या सर। होता है, और व्हाट आर द स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेंट्स एक्चुअली, व्हाट आर द स्टैंडर्ड फ्लूइड्स टू, हम्म और व्हाट यू कैन से रेफरेंस फ्लूइड्स, नॉट स्टैंडर्ड, हम्म स्टैंडर्ड हम्म तो हम्म। नहीं रहेगा, व्हाट आर द रेफरेंस फ्लूइड्स टू मेजर द ODP एंड GWP? सर मुझे लगता है कि ओजोन डिप्रेशन पोटेंशियल के जो हमारा रेफ्रिजरेंट पूछ रहे हैं कि सर कौन बेटर रेफ्रिजरेंट होगा मतलब उस नहीं नहीं नहीं, कंडीशन। रेफरेंस फ्लूइड, रेफरेंस फ्लूइड। अगर हमें कोई अच्छा नंबर डिफाइन करना है तो वी आर गोइंग टू अच्छा अच्छा। डिफाइन सम नंबर विद रेफरेंस टू समवन ना, जैसे ऑक्टेन नंबर, सिटेन नंबर मेजर करते हैं, तो वी आर हैविंग हम्म सम रेफरेंस फ्यूल। हम्म। इन कंपैरिजन टू दोज फ्यूल्स वी डिफाइन द ऑक्टेन नंबर, नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे ही कुछ रेफरेंस फ्यूल्स हैं, रेफरेंस व्हाट यू कैन से फ्लूइड्स हैं, रेफरेंस रेफ्रिजरेंट आल्सो यू कैन से, जिनको हम एज ए रेफरेंस मान के हम GWP और ODP डिफाइन करते हैं। मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग में CO2 होना चाहिए सर। हाँ ठीक है। और क्लोरीन होना चाहिए ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल। R11 एंड R12। नहीं उसको R1348 कर सकते हैं सर, मतलब टेट्राफ्लोरो इथेन को। 134 कहाँ से आ गया? R11 सॉरी सॉरी, फेरोन फेरॉन सर, फेरोन। फेरॉन फेरॉन यस, फेरॉन R11 या। R134 का तो GW हाँ ODP उस जीरो है होता ना। है उस, हाँ उसका तो सबसे बेस्ट है सर वो। Zero। उसका तो जो R फेरोन है, फेरोन का ODP कितना है? 1। 1 1 या। और कार्बन डाइऑक्साइड का GWP कितना है? 1। हाँ हाँ हाँ। ये क्या है? रेफरेंस फ्लूइड्स हैं टू मेजर द GDP एंड ODP एंड GWP। चलो ओके मैं सर। आपको भी फीडबैक देता हूँ अमित। देखो ठीक है, हम्म आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक है, एक तो एक्सप्रेशन अगर कुछ रिकॉल नहीं हो रहा ना, इट इज गुड टू मेक सम काइंड ऑफ आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर। यू कैन गिव या। सम एक्सप्रेशन कि यस यू आर थिंकिंग, एक्चुअली यू नीड टू थिंक। अब ऐसा एक्सप्रेशन देने की जरूरत है, यू नीड टू थिंक, यू नीड टू अप्लाई योर माइंड। और ऐसा टफ एक्सप्रेशन मत दो कि आप बड़े कोशिश कर रहे हो नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा नहीं करना है। ठीक है? अच्छा इट सर। हैपेंस एक्चुअली, इट हैपेंस इन द इंटरव्यू, समटाइम वी फॉरगेट हम्म सम वेरी बेसिक थिंग्स आल्सो व्हिच जनरली वी स्टडी। तो ये यस नॉर्मल नेचुरल थिंग चीज है अमित, यस इसका यस। प्रेशर नहीं लेना है। इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन तो आंसर करने होते हैं, बट उसके साथ साथ आप कैसे हैंडल कर रहे हो उस सिचुएशन को। इन क्लास ऑल्सो दिस कैन हैपन, सपोज यू आर इन ए क्लास और बच्चे ने पूछ लिया कुछ भी, तो फिर यस क्या यस। वहां पे ऐसे करने लग जाओगे? नहीं। ठीक है। तो आपको एक्सप्रेशन अच्छे देने हैं, डिलीवरी ओके स्टाइल अच्छा रखना है। एक आप बहुत अच्छे से आप इफेक्टिवली नहीं बता रहे थे आज, आज आपका डिलीवरी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। आई डोंट नो, इट मे बी द रीजन कि आप इस सब्जेक्ट में इतने कंफर्टेबल नहीं थे, ये एक रीजन हो सकता है। या जो क्वेश्चन मैंने पूछे, ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर नहीं किए थे, हो बट सकता बहुत है। अच्छे से आपने डिलीवर नहीं किया। ठीक है? तो आज की यस परफॉर्मेंस से तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट आपको इस पे एफर्ट करने चाहिए, बिकॉज सम ऑफ द वेरी श्योर। बेसिक थिंग्स यू मिस्ड। समर यस एयर सर। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है सर? समर एयर कंडीशनिंग द एयर कंडीशनिंग विच वी कैरी आउट इन द समर। वहां पे हम क्या करते हैं? डीह्यूमिडिफिकेशन करते हैं और कूलिंग करते हैं। तो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, उसको क्या बोलते हैं? समर एयर कंडीशनिंग। हीटिंग एंड हम्म ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है? हमारा विंटर एयर कंडीशनिंग। सो एयर कंडीशनिंग इज नॉट ओनली द डिक्रीज इन टेम्परेचर, we can go with increase in temperature or decrease in temperature. So purpose of air conditioning is to maintain the comfort conditions. ठीक है? सर तो आप विंटर एयर कंडीशन में हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन होगा ना। ह्यूमिडिफिकेशन, यस यस हाँ यस। हाँ तो वो हाँ। बेसिक डिफरेंस भी आपने बहुत एक्यूरेटली नहीं बताया रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और कूलिंग में। और ये या। बेसिक चीजें हैं जो आप मिस कर गए। सुपर हीटिंग का आपने ठीक बताया था, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज भी आपने बहुत सही बताया। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर आपने नहीं बताया, और आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया कि मेरे मेरे को नहीं पता है, बट आपने उसका वर्किंग प्रिंसिपल नहीं बताया। ठीक है? तो अगर नहीं पता, इट इज बेटर टू से कि सर आई डोंट नो, आई विल स्टडी, आई विल गो थ्रू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो वो है, बाकी ठीक है, ओवरऑल ठीक है, ठीक गया है। थोड़ा और इस पे मेहनत करो इस सब्जेक्ट पे। हाँ सर मैंने श्योर। आपसे अभी आज सिर्फ बुकिश क्वेश्चन पूछे, इंटरव्यू कैन आस्क वेरी बेसिक डेली लाइफ क्वेश्चन ऑल्सो। इन्वर्टर एसीज क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, गाड़ी में एसी कैसे काम करता है, लिक्विफिकेशन कैसे करते हैं हम गैसेस का। अच्छा, किसी हाँ जगह पे आपको एसी लगाना है, हाउ यू विल फाइंड आउट कि कितने टन का लगाना है।
लोड कैलकुलेशन कैसे करोगे, सम बेसिक थिंग्स यू नीड टू नो। Yes. ठीक है, टन क्या होता है, व्हाट इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, सीओपी क्या होता हम्म, है, एक्चुअल सीओपी क्या होता है, आइडियल सीओपी क्या होता है, ठीक है, हम्म, एक्सपेरिमेंटल सीओपी कैसे होता है, कैसे मेजर करोगे सीओपी अगर आपके पास कोई सेटअप है, डिवाइस है, हम्म, एब्जॉर्प्शन सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। आरएसी तो बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, yes, yes, थोड़ा इस पे yes. मेहनत करो, एंड अगेन यू Okay, कैन जॉइन मी आफ्टर रिवाइजिंग ऑल दोस थिंग्स। गुड, okay, sir. फाइन, Oh, thank you, sir. ओके, गुड लक, बेस्ट लक फॉर इंटरव्यू। Thank you, sir. Thank you.